Right. Yesterday we were going through Sister Kuber. Kuber, please put your email ID in chat. Okay, sir. Okay. A quick recap of yesterday. So we were going through, right? We were going through IPv4. Okay. What is IPv4 addresses? For example, we are taking 203.0.113.0. Okay. So this is our IP address. IP address has two portions. Okay. One is network portion and the other is host portion. It is more of like network portion will tell you your location and host is mostly the exact device. Okay. It is analogous to your country, state, city. Okay. And the exact building in which the data has to be sent, like the letter has to be sent, for example. Okay. So the similar way in a network, sorry, in a network, suppose this is a network, there are sub networks. Okay. These are called subnets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are nothing but locations on the network on the internet. So the network portion will tell you in which subnet you have to go, in which network among this network you have to go. The message has to go. Okay, the data has to go, as it has to go to 1, 4, 2, 3, 5, whatever. And in this, there are multiple laptops, PCs, phones, etc. The host portion will tell you to which exactly this device right here is the one where I want to go. So that is how IP addresses help to send data from one device to another. Okay. Now, how to identify the network portion? Like if I give you this, how do you know which is the network portion, which is the host portion? Only this can be network portion and this can be host portion. This can be network and this can be host, or all of this can be network, only the last can be host. Okay. Anything can happen. So we need to know, we need to identify how much is the network, how much is the host. कौन सा पार्ट कितना पार्ट लोकेशन वाला है और कितना पार्ट एग्जैक्टली उस डिवाइस का एड्रेस है. Okay. So there are two ways. One is classful
addressing, and one is classless addressing. Class full में classes already defined होती हैं. Classless में we use something called as subnet mask in order to find network portion and host portion. Okay. The rest who are not there yesterday, once I give you access to the recording, please go through it. You will get it in much detail. Okay. Again, I would suggest कि initial जो classes है वो miss मत करो. उसके बाद it's fine. I mean, you can be absent. You can, I mean, whatever you are busy with, it's fine. But initial, at least first, क्या कहते हैं, first unit खत्म होने तक तो please attend regularly. Okay. It becomes very difficult to continue with the next lecture. Like अभी जो सिखा रहा हूँ, and because you haven't seen the recording or you were not present for the previous year. Okay, just a suggestion. Now, okay. Everybody knows hexadecimal and binary numbers. Yes, sir. Okay, good. So, okay, that was from one person. Others? Yes, no. I mean, there is no explanation. You have to just say yes or no. Yes, sir. Okay. Seems like Shubham is out somewhere. Okay. Yes. Yes. Okay, good. I am assuming the same for the rest. Okay. So, ये हमारा sorry 3.0.113 and dot 10. ठीक है. I'll write it in binary 11001011. For 0, I'll just keep it as it is because everything is 0, like 4 zeros and 4 zeros. Okay. For 113, I think 128 won't be 64, 32. So 0, 1, 1, 64, 32, that's 96, 16, and 112. And then we have just 1. Okay. And this is 1010. Everybody knows how I got this, right? Everybody knows binary वाला. ठीक है. अगर नहीं पता है तो अभी पूछ लो. We won't go without that explanation ahead. ठीक है. Okay. Now we'll add. Now we want to know how much is the network portion, how much is the host portion. For that, we are going to use subnet mask. We are right now doing classless addressing. That is why we apply a subnet mask. I apply a subnet mask of 255.255.255.0. This is what is called a subnet mask. Let's write that in binary. 255 is all ones. Okay, here also all ones, and then we have all zeros. Okay. Now, what is subnet mask? First, I'll tell you what is subnet mask. Okay, it is a series of ones and series of ones followed by a series of
zeros. ठीक है, a series of ones followed by a series of zeros. This is what a subnet mask is. Now wherever there is one, तो ये वन जहां तक जा रहा है वहां तक it is a network portion. ये 110.0.1.0 whatever it is. So 203.0.113 is my network portion, and .10 here ऐसा is my host portion. इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क में एक कोई जगह है जिसका एड्रेस है 203.0.113, यहाँ का एड्रेस है 204.0.12, यहाँ का एड्रेस है 205.3. समथिंग, ठीक है। तो ऐसे ये वाले एड्रेस में 10th डिवाइस, एक डिवाइस 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is my device where we have to send the message. ठीक है, so this is our network portion, this is our host portion. Is everybody clear on this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, your job is not to create the subnet mask. ठीक है, when you would go into a job or troubleshooting, or you would be a network engineer, you would use this information to figure out कि IPs correctly configured है, network ठीक से बना है कि नहीं, or the subnet mask that you have used is properly applied or not. So is there a problem in the connection because the addresses are not in the same space, or if it is missing something, या फिर mask गलत लगा है because of which a particular what you say device gets thrown out of the network and so on. ठीक है, so it's not more of the designing, it's more of the troubleshooting to identify if the things are configured correctly. Okay, now another thing, so generally it is very easy agar boundary pe ho, like only 203 can be network and 0113.10 can be host. Similarly 203.0 can be network, 113.10 can be host. Then this can be network and this can be host. Okay, so it is easy जब वो border पे हो, ठीक है। These are octet borders, ठीक है, octet borders. octet borders क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 bits हैं, यहाँ पे 8 bits, यहाँ पे 8 bits, यहाँ पे 8 bits. That is why this is the octet border. और जब network portion उन lines पे होता है, it is easy, but not necessarily वो border क्या कहते हैं, the network portion will be on the dotted line, the octet border itself. ठीक है, it can be different as well. For example, let's say this is a IP address. Now again, how do you write this? This will be 1010. For 0 I'll keep it as it is, in the assumption that it is 8 bits where all are zeros. Okay, and the subnet mask that I add here is 255, 255, 240, 240.0. Please note this is 240 now. Okay, so we have 111, 111, then again all ones. Now we have 1111, 0, 0, 0, 0, and we have all zeros. Now what was subnet mask? Series of ones followed by a series of zeros. Series of ones followed by series of zeros. Now see, our octet border, our dot is here. In the previous example, it was ending right at the dot, the ones. But here
It is not. It is ending before that. Okay. These are a little bit tricky and difficult to identify and check the configured part. But now this is the network portion and this is the host portion. Okay. Clear? Not necessarily it will be at the octet border only. So now all these part is wherever there is 1, it is network portion. Wherever there is 0, it is host portion. So this binary wise. ठीक है? Binary wise till here इसके जो 1 2 3 4 1 2 3 4 है यहाँ तक till this part it is network. The rest is host. Okay. And लिखते वक्त यू डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू दिस. तुमको लगेगा कि फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आई शुड बी राइटिंग देन 10.0.240.10. नहीं, ऐसे नहीं होता. यू डोंट राइट इट लाइक दिस. यू कीप इट एज इट इज एंड यू एड स्लैश. एंड कितने बिट्स गए हैं? 8 8 16 प्लस 4. ओके, सो दैट वुड बी 20. Right? So you write /20. This is known as CIDR notation. Okay? This is known as CIDR notation, which means classless interdomain routing. Classless interdomain routing. Okay. Now let's take the first one example, which was 203.0.113.10. इसमें we had this as network portion, this as host portion. ठीक है? उसका subnet mask was 255.255.0. Now how do I write this in CIDR notation? I write it as 203.0.113.10 स्लैश वंस कहां तक है? यहां तक 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स विच इज 24. बचते कितने हैं? 8. सो स्लैश 24. नाउ लेट्स से इफ आई हैड रिटन समथिंग लाइक दिस /30. ठीक है? तो बाइनरी में okay, this is wait, where did it go? Okay, I'll just write it down. 128, we need 64, that would be 18, 92, 92, then zeros because 1632 nahi jayega, 1932. Then we have 8, 200, then 2 and 1. Okay, we have all zeros. We have 128 का नहीं बैठेगा, 164, 32, 16, फिर ये and then 10 का. Okay, ठीक है, ये हमारा IP and this is the CIDR notation. This notation is what? To denote the subnet mask. ठीक है, what will be our subnet mask then? /30 में सबनेट मास्क क्या होगा? टेल इट इन बाइनरी. ये नंबर में मत बताओ, डिफिकल्ट हो जाएगा. सी जब यहाँ पे 255.255.255.0 था तब इट वाज स्लैश बिट. सर लास्ट 2 डिजिट 0 रहेगा. Right. बाइनरी में. Correct. So just for convenience, I'll write it 255, but this is all one. This is 255 all one. This is 255 all one. And यहाँ पे it will be 1 1 1 1 1 1 and the last two will be zeros. ठीक है? Because we used up 30 bits. We used up 8 plus 8 plus 8 plus 3 and 3 6, which is 24 plus 6, which is equal to 30. So
30. And as you know, this whole thing is our network portion. That means a location is identified by this much area. तो host कितने हुए? 0 and 0. So how many can be host? I can have 0, 1 and 1, 0. Okay. I cannot have 0, 0 and 1, 1. So there can be to this network. Okay. If somebody gives you this network 203.0.113.10/30, it means उसमें सिर्फ 2 ही PCs आ सकते हैं. उसमें आएगा लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 जिसका एड्रेस होगा 203.0.113.01 और एक का होगा 203.0.113.10. ठीक है. ये दो नहीं आएंगे. By general knowledge, do you know why? Okay, because we have to accommodate two addresses called network address and broadcast address. ये क्या होते हैं? I will tell you soon. ठीक है. But for now, just assume कि /30 होगा तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में ये पूरा नेटवर्क है. ठीक है. 203.0.113.10/30. इसमें सिर्फ 2 ही पीसीस कनेक्ट हो सकते हैं, 2 ही लैपटॉप्स कनेक्ट हो सकते हैं और उन लैपटॉप का आईपी होगा, एक का होगा 01, एक का होगा 10. क्लियर? Okay. Others, please confirm. Okay. Like I said, these are basic concepts जिस पे सब based है. So, have you understood this? Yes. No. लास्ट पार्ट नहीं समझा थोड़ा. ओके. लास्ट पार्ट कौन सा वाला? ये जो बताया मैंने जिसमें फिट हुए. वो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो. अच्छा ठीक है. एक सेकंड. ठीक है. ये हमारा कैलकुलेटर है. ठीक है. इस आई विल करती हूँ. सी. अब इसमें हम डालते हैं हमारा /30. ठीक है. सबनेट जो था /30 and we'll put our IP address. So our IP address will be 203.0.113.10. ठीक है. Now see, I'll tell you what network address, broadcast address is. But for now, see, total number of hosts 4, number of usable hosts 2. ठीक है. ये हमारा सबनेट मास्क जो था. ठीक है. CIDR notation like I told you /30. अब what I mean is, हर एक नेटवर्क में दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं, ठीक है, नेटवर्क्स हैं, all of them have 3 types of addresses. एक होता है types, 3 types of addresses. एक होता है नेटवर्क एड्रेस, एक होता है होस्ट एड्रेस और एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस. AD कास्ट एड्रेस. ठीक है. दिस इज आवर राउटर. ठीक है. एक मशीन, 2 मशीन, 3, 4, 5, 6, 7. ये है मेरा नेटवर्क. अब इस नेटवर्क में देयर आर हाउ मेनी यूजेबल
होस्ट मतलब कितने कंप्यूटर मैंने कनेक्ट किए हुए या फिर कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। there's 1 2 3 4 5 6 7 as in you, me and everyone. I, प्रथमेश, ममिता, ठीक है, दिग्विजय, कुणाल वगैरह, ये सब हम एक इसको कनेक्टेड है। नाउ इसके जो आईपी एड्रेसेस है, ठीक है, इसका जो आईपी एड्रेस होगा 203.0.113 डॉट फॉर एग्जाम्पल 10 फॉर एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल, इसका एक आईपी होगा, इसका एक आईपी एड्रेस होगा, this will have an IP address, this will have an IP address. So this computer, these laptops, इनके जो IP addresses है, they are called host IP addresses. Okay. Now ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो राउटर है हमारा, इसको एक लॉजिकल एड्रेस, मतलब ये फिजिकली इस पे नहीं है, लॉजिकली है, लॉजिकल एड्रेस होगा विच इज लेट्स से 1.2.3.4. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, ठीक है। तो नेटवर्क 1 का आइडेंटिफिकेशन है ये आईपी एड्रेस, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस। यहीं पे एक और एड्रेस भी है लॉजिकली, ठीक है, फिजिकली नहीं। व्हेन आई से फिजिकली, फॉर एग्जांपल जब मैं इसमें अपना ढूंढने जाता हूं, ये 192.168.0.104 ये मेरा फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, जो मेरे मशीन पे लिखा गया है, वैसे ये वो एड्रेसेस नहीं है। ओके, दीज आर लॉजिकल, वर्चुअल। there is another address, let's say 5.6.7.8. this is a broadcast address, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा होता है कि अगर कोई इंटरनेट से इसको मैसेज करता है, लेट्स से आई से कमांड लाइन, ठीक है, कमांड लाइन पे मैं लिखता हूं मैसेज 5.6.7.8। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस का क्या मतलब है, वो जो मैसेज आएगा ना, वो जो मैसेज आएगा, it will go to everyone, it will go to 1, it will go to 4, it will go to 7, 2, 5, 3, 6, ठीक है, like an FM radio. okay, so these are all users. यहाँ पे FM रेडियो है, ये अपना टावर है, हम सब इसको सुन रहे हैं। जब FM पे कोई इस IP पे मैसेज भेजेगा, हम सबको सुनाई देगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक स्पेशल अलग तरह का एड्रेस होता है जिसमें ब्रॉडकास्ट मैसेजेस डाले जाते हैं। नेटवर्क एड्रेस वो है जिससे एक नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल। every network has a network address and a broadcast address. और जो बच्चे कुछ एड्रेसेस हैं, those are host address. That is why यहाँ पे when I said /30, ठीक है, ये पूरा मेरा कितना हुआ, होस्ट पोर्शन हुआ। मेरे पास कितने बिट्स बचे हैं, 2 बिट्स बचे हैं। I have 1 bit, I have second bit, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशंस क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आई हैव, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैंने क्या बोला था, एवरी नेटवर्क हैज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड अ नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक यूज कर लिया नेटवर्क के लिए, एक यूज कर लिया ब्रॉडकास्ट के लिए, बचे कितने, 2। और वो 2 कौन से होंगे, होस्ट एड्रेस, होस्ट मतलब लैपटॉप,
स्मार्टफोन, टीवी, पीसी, व्हाटएवर, तो इस पे लगेगा कंप्यूटर, इस पे लगेगा एक कंप्यूटर, मैं ज्वाइन कर लूंगा. नाउ व्हाई 00 and 11 I chose for network and broadcast, I will tell you, वो हम सीखेंगे. But for now, this is how it works. Let's go back to our calculation. अब देखो नेटवर्क एड्रेस इसमें लिखा है. So network address is what? Sorry, 203.0.113.8. यूजेबल होस्ट रेंज क्या है? 9 और 10. ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है? 11. ठीक है. सी ब्रॉडकास्ट एड्रेस 11 और नेटवर्क एड्रेस था, what was the network address? It was 8. Okay. ठीक है, वो कैसे होता है I'll tell you. See, 203.0.113.10. Let's focus on the last part. 01010. हमारा सबनेट मास्क क्या था? यहाँ पे 255 था, 255, 255 और यहाँ पे था आई थिंक 0 था, राइट? /30. /30 मतलब 11111110. ठीक है. I'll draw a line over here. Sorry, 1011. Okay. Right. So now we have 0 1. ठीक है, which means 1001 and 1010. इसका क्या हुआ? 8 + 1 which is equal to 9. तो एक पीसी हुआ 113.9. सी ओवर हियर 9 और 10 यूज कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज 10 and 10, ये वाला. So this is 1, this is 2, which is equal to 10. So 3.0.113.10. तो ये नेटवर्क कैसे दिखेगा? ऐसे. ठीक है, ये हमारा राउटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर, एक का एड्रेस है 203.0.113.9, एक का है 203.0.113.10, और जो बचे हुए दो एड्रेसेस थे ये नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट, दे आर हियर. सॉरी, they are here on the router. These addresses, network address, broadcast address 203.0.113. क्या था वो? 8, and similarly to 11. These are on the router. These are not physical addresses. They are not assigned to this router. ठीक है. Now, understood? नहीं हो तो बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझा. सर. Yes. सर, तो मतलब नेटवर्क एड्रेस ऐसा मतलब 0 से एंड होना चाहिए या फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब 1 से एंड होना, ऐसा कुछ नहीं है ना? Yes, yes, ऐसा है. तो उसमें ब्रॉडकास्ट में कैसा है कि ऑल, सॉरी, नेटवर्क में it is all ends with zeros and broadcast में all ends with 1. The host portion, ना, the host portion of an IP address जिसमें सारा 0 हो, वो
नेटवर्क है और जिसमें सारा 1 हो वो ब्रॉडकास्ट है। सर पर राउटर पे जो दिया हुआ है वो तो 8 से खत्म हो रहा है। किस पे? जो ये राउटर पे जो नेटवर्क एड्रेस है वो 203.0.113.8 है। एक सेकंड, 203.0.113.8 आ गया है। 8 was, हाँ ऐसे देखो, ठीक है। अपना ये देखो, नेटवर्क पोर्शन कहाँ पे, यहाँ तक है और उसका एंड्स इन 00, सिर्फ होस्ट पोर्शन है। आई सेड द होस्ट पोर्शन, ओनली द होस्ट पोर्शन विच एंड्स इन 00। ओके सो सर मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट हाँ, में मतलब you जो will have to होस्ट convert पोर्शन to में 0 binary. रहने चाहिए। हाँ वो, yes, like I said, it's tricky until you convert it into binary. You have to convert it into binary, तब जाके ठीक से समझेगा। So you can say कि वो जो 8 वाला है network address, so network address has all zeros in the host portion. हमारी लाइन यहाँ तक है नेटवर्क वाली, so ये तो तब तक तो इग्नोर ही कर सकते हो। एंड होस्ट पोर्शन में क्या है, 00, so that is our network। और यहाँ पे 11 जो था, आउट ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट आई टोल्ड यू, ये 11 इट इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और टेक्निकली जब सबनेट मास्क खोल के देखोगे बाइनरी में तो सब कुछ ही 1 होगा, बिकॉज दिस लास्ट इज आल्सो 1, सो इट विल बी 255.255.255.255, सब कुछ ही 1 होगा, बिकॉज दिस लास्ट 2 आर आल्सो 1 एक्सेप्ट फॉर ये 0 वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे दिस, यहाँ तक, ठीक है। So convert it into binary before and then see where the network portion line is, host portion line is, and after that you check कि कौन सा क्या है, ठीक है। So network address is all zeros in the, sorry, in the host portion, this is important, ठीक है। Broadcast address is all ones in the host portion and अपना host address is all, is sorry, combination of ones and zeros in the host portion, okay. Others, any more doubts? If not, we'll go to next. ठीक है, now let's go to classful addressing. As stated before, classful addressing was 1995 and before. जो हमने अभी सीखा classless, this is used after 1995. Classful was used 1995 and before, ठीक है। इसी पीपीटी में मैंने क्या डाला है, यस, क्लासफुल एड्रेसिंग, तो उसमें होते थे क्लास, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, वन मोर पॉइंट टू नोट, किसी भी नेटवर्क में द फर्स्ट एड्रेस इज ऑलवेज नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस इज ऑलवेज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, फर्स्ट एड्रेस क्या है, .8 नेटवर्क एड्रेस, लास्ट एड्रेस क्या है, .11 विच इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो एक नेटवर्क का, इसका नेटवर्क क्या है, 8 से लेके 11 तक, .8, .9, .10, .11, ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में
आईपी एड्रेस है 4 लेकिन कंप्यूटर है 2, 9 और 10। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एड्रेस है वो नेटवर्क एड्रेस है और जो लास्ट एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेटवर्क। ठीक है, जितने भी नेटवर्क है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, फर्स्ट एड्रेस इज ऑलवेज नेटवर्क एड्रेस, लास्ट एड्रेस इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर एक ही एड्रेस है तो अगर /32 हुआ, ठीक है, तो उसको कंसिडर कर सकते हो एज अ नेटवर्क एड्रेस। अगेन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सब बाकी का जो भी लगता है, इट इज टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट। दैट इज व्हाई I didn't mention and dive deeper into it, but a general thumb rule is first address is always network address, last address is always broadcast address. Okay, back to the classful addressing. So we have classes A, B, C, D, and E, and this is the range of those classes. So we have 0, 0, 0 to 127, 255, 255.255, right? So we have 0, 0, 0, 0 up to 127.255.255.255. तो इसमें कैसे टाइप के एड्रेसेस आएंगे? इसमें आएगा 0.0.0.1, इसमें आएगा 1.0.1.0 अप टू 127। मतलब यहाँ पे जो है ये 0 to 127 जा सकता है, ये 0 to 255 जा सकता है, this to 255 and this to 255. So I can have something like 0, let's say 3.255.127.4, ठीक है, this is in class 1, class A। ऐसे ही सारे क्लासेस डिफाइंड है। बी के लिए इट इज 128 to 191, 192 to 223, डी का ऐसा एंड ई का ऐसा। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दीज आर द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, तो इसमें ये जो 128.0.0.0 है, दिस विल बी नेटवर्क एड्रेस, और ये जो लास्ट है 191.255.255.255, इट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, इसमें जो था 128.0.0.0 and up to 191.255.255.255, इसमें 128 is the, तो ये क्या हुआ? दिस इज अ क्लास बी। ठीक है, इसको लेट्स कंसिडर इट एज अ नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क बी। ठीक है, इसका ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है, सिंस दिस इज द फर्स्ट एड्रेस, इट इज द नेटवर्क एड्रेस, एंड ये जो लास्ट एड्रेस है, इट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लास्ट एड्रेस, दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, इनके बीच में जैसे मैंने ये दिखाया, ठीक है, this address is in this range, ये रेंज के बीच में है। वैसे ही इनके बीच में जो भी एड्रेसेस हैं, those are host addresses and these are the number of computers you can connect, जिनको इसमें से कोई भी एक एड्रेस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल .0.0.1, यहां से कंप्यूटर्स लगना शुरू होंगे, डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, टीवी। ठीक है, 156.3.4.5, this is a computer that falls in between this range. Okay, we have C, we have D, we have E. अब जो पहले के 3 क्लासेस है ना, A, B, C, ठीक है, what we call them, classes A, B, C were called classes A, B and C। ठीक है, these are called unicast addresses। ठीक है,
we use this on the internet and our local network to communicate. Have I written it over here? I'll write this here. एक सेकेंड ना. ठीक है, I'll just write it. इसको हटा देता हूँ. नेवर माइंड. ठीक है, क्लास A B C addresses. ठीक है, what are they called? They are called unicast addresses. ठीक है, they are called unicast addresses. We use this on the internet and our local network to communicate. ठीक है, then D, class D addresses is called multicast. ठीक है, multicast is when we have one server that sends out a stream of info and there are a lot of devices on the network that can listen to it. जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिखाया था FM radio. ठीक है, it is a multicast address. So FM will have the multicast address. We all are listening to it and the information on that क्या कहते हैं, on that address gets delivered to everyone who is listening on that IP. ठीक है, जो भी उस चैनल पे उस IP को सुन रहा है उन सबको डेटा मिल जाता है. एंड मल्टीकास्ट, सो यू आर मल्टीकास्टिंग, मल्टीपल चीजों को तुम वो डेटा भेज रहे हो. ओके, सो मल्टीकास्ट इज व्हेन वी हैव one server that sends out a stream of info and there are a lot of devices on the network that can listen to that. ठीक है, class E is experimental. कुछ करना नहीं है. We have nothing to do with experimental classes. We don't use it. Okay, अपना कुछ लेना देना नहीं है उससे. ठीक, now let's, this is so network address is mainly used in routing tables and subnet calculations, not in direct communication. ठीक है, commonly used for network announcements, ARP requests and other scenarios where you need to communicate with all devices on the internet. Basic definition, and you would write it in your exams. ठीक है, ये address range है. Okay, I have not yet gone to private IP, right? ठीक है, wait. तो क्लासफुल एड्रेसिंग का कैसा था? क्लास A, ठीक है, we have 10.0.10.10. ठीक है, अब इसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा है? ठीक है, इसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा होगा? बेस्ड ऑन दिस रेंज क्लास A में नेटवर्क पोर्शन होता है इतना. ठीक है, दिस इज द नेटवर्क पोर्शन and this is the host portion. How you can verify? You can verify based on this 127.255.255.255. ठीक है, so it will go from 0 से 127 तक जाएगा, ये 255 तक जाएगा, ये 255 तक जाएगा. ठीक है, for class B, ठीक है, 128.0.0.0 to 191.255. 55.255 सर कितना हुआ? या ठीक है, एग्जाम्पल 172.16.10.10 अगर देखूं मैं. ठीक है,
So this is the network portion and this is the host portion. ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक network portion and host portion. Okay, for class C we have 192.0.0.0 223 dot सारे 255 for convenience. एक एग्जाम्पल आईपी अगर मैंने लिया 192.168.0.10, this is our network portion, this is our host portion. इस रेंज के लिए it would be, this is the network portion, this last is the host portion. Similarly 223.255.255 will be network और लास्ट का जो 255 है that would be host portion. ठीक है, in our previous example ये कौन से क्लास में आएगा दिस आईपी? अगर हम 1990 में होते अभी, अगर हम 1990 साल में होते और ये आईपी तुमको देता कोई, तो ये कौन से क्लास में बिलोंग करता है? क्लास सी. यस, ठीक है, इट बिलोंग्स टू क्लास सी. क्लास डी, अब क्लास डी में एग्जाम्पल जो स्टार्ट होता है 240.0.0 से लेके 239.255 और लास्ट में भी 255. ठीक है, इसमें सब कुछ ही इस नेटवर्क पोर्शन. ठीक है, दैट इज व्हाई क्लास डी इज मल्टीकास्ट. ठीक है, इसमें देयर इज नो बैक एंड फोर्थ एंड ऑल, इट इज जस्ट multicast. Multiple people get the data like FM. So हम सब, you, me and everyone is listening to this IP. ठीक है, और जब इस IP पे कोई बात करेगा we will listen to it. Each and every one of us will listen. It's not like कि सिर्फ इसी को मिलेगा. ठीक है, हम सबको मिलेगा because it is multicast address. Again, I won't go much into Classful. We don't use it. ज़्यादा कुछ है भी नहीं. But and I mean कुछ हो फिर भी doubt तो बताओ. Otherwise I'll go ahead. ठीक. इसके बाद तो प्राइवेट आईपी एंड ये है. I know we have gone through private IP. ठीक है, प्राइवेट आईपी वाला एक जल्दी से सिखा देता हूँ. इसमें कुछ है नहीं ज्यादा. ठीक है, प्राइवेट आईपी रेंज, देयर आर IPs के, अगेन इट्स नॉट अ टाइप बट देयर आर टू व्हाट यू से कैटेगरीज. ठीक है, जिसमें एक होता है प्राइवेट आईपी, ओके, एंड द अदर इज पब्लिक आईपी. डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई शोड यू क्या होता है प्राइवेट एंड पब्लिक? याद है कि मैं रिपीट करूं? चलो ठीक है, रिपीट कर ही देता हूं. एवरीवन इज देयर ना, कि सो गए? यस सर, यस. Yes. चलो ठीक है, हो तो कहीं. ये रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना. ठीक है, पढ़ लेना, डाउट्स हो तो पूछना. अभी तो ठीक है, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को. एनीवे, यस, प्राइवेट एंड पब्लिक, लाइक आई सेड, इंटरनेट पे सिर्फ पब्लिक आईपीज ही चलती हैं. ऑल कम्युनिकेशन इज डन बाय पब्लिक एड्रेस. ठीक है, प्राइवेट आईपीज आर यूज्ड फॉर प्राइवेट networks or private connections.
तो अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट का मैं एक अगर एम्प्लॉय हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही अंदर, इस कंपनी बिल्डिंग के अंदर ही अगर मुझे बात करनी होगी, तो आई कैन यूज प्राइवेट आईपी addresses. If I want to talk with the internet, अगर मुझे फेसबुक सर्फ करना है, यूट्यूब खोलना है, गूगल पे जाना है, एनीथिंग, कुछ भी, आई नीड अ पब्लिक आईपी address. In that case, my private IP will be converted to public IP. ये कन्वर्जन क्या है, कैसे है, विल सी इट लेटर, स्टडी इट लेटर. फॉर नाउ नॉट ऑफ कंसर्न. सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि इंटरनेट पे पब्लिक आईपी ही चलता है, और अगर हमें बात करनी होगी तो द प्राइवेट आईपी इज कन्वर्टेड टू पब्लिक आईपी. द एग्जांपल आई शोड यू, मेरा प्राइवेट आईपी क्या है, 192.168.0.104. मेरा पब्लिक आईपी क्या है, डायरेक्टली आना चाहिए था वैसे. ठीक है. दिस इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं कहां पे, टीम्स पे, जो कि चल रहा है कहां पे, इंटरनेट पे, राइट. सो माय व्हाइट बोर्ड कहां गया है, राइट. सो माय 192.16, हाँ, 168.0.104 gets converted, अरे यार, converted to, क्या था ये, one 116.75 dot, oh my god, 63 to 40, and only then this IP is allowing me to talk to you on Teams. This IP is the one that is connected to Microsoft 365 का Teams एप्लीकेशन. ठीक है. सो पूरी दुनिया के लिए what am I am 116.75.63.240. लेकिन मेरे घर के लिए who am I am 192.168.0.104. For you guys I am 116.75. For my parents and my smartphones and जो भी मेरे घर पे devices हैं, for them I am 192.168.0.104. Clear? Yes, sir. Thank you. Now private IP range, पूरी दुनिया में बस यही रेंजेस है, 10, 172.16 और 192.168. मेरा देखो यहाँ पे 192.168. अगर तुम्हारा चेक करोगे तो तुम्हारा भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में होगा. दुनिया में बस इतने ही प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है. एनीथिंग एल्स अदर देन दैट इज अ पब्लिक आईपी. ठीक है, सिंपल, क्लियर. ये जो 203 एग्जांपल लिए थे हम, 203.0.113.0, what kind of address is this? Public. Yes, 172.16.0.3. This is Private. okay. Let me see.
This two people left, yeah. Okay. Yeah. What is this IP address? Private or public? So I guess public. Yeah. The range starts from 168 and this is 158. तो ये हुआ पब्लिक. ठीक है. सिर्फ एक इंसान आंसर कर रहा है, बाकी के भी प्लीज. I expect an answer from you guys as well, the rest of the people. Okay. Next, where are we? Before that, I'll just give you what is people who left. Okay. Kunal, Digvijay, Ashay and Kuber. ठीक. Okay. Now, in general, for definition, as in something that you can use to write in your exams, network address is identifier of group of devices. Okay. And broadcast address is identifier for, sorry, for identifier for all devices on a network. Used to send messages to all devices. Used to send messages to all devices in network. Okay. Okay. Now, एक question है कि what will happen if you send a message to network address? Prathamesh, I think you are the one who was answering it right now, right? Yes, sir. Okay. Other than Prathamesh, others. Next time से कैमरा ऑन रखेंगे. Sir, voice is coming or not? नहीं, शुभम नहीं आ रहा है.
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ के आओ, बताओ मुझे कि what will happen if you send a message to network address and broadcast address. What will happen if you send a message to network address? ठीक है, similarly what will happen if you send to broadcast address? ठीक है, okay. I guess that's it for today. There are a few, matlab, related to this only. There were few things, but I think I'll take it in the next lecture when everyone is there. Starting में तो at least सब होते हैं. So yeah, thank you guys for sticking around. Thank you, sir. Thank you. Okay. Bye bye.